the oxidation state. ठीक है. Now we are going to look at a few cases. और उससे पहले I will talk about thing known as D scale. ठीक है. यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए D scale. D scale for ml6. D scale for ml6. ठीक है. क्या मतलब है? Let us suppose you have number of electrons in D subshell as 1 electron. Then if you have strong field ligand, then what will be the occupation at T2G level and EG level? If you have weak field ligand, then what will be the occupation at T2G level and EG level? ठीक है. So I will start slowly. ठीक है. आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिए जरा. And please, I need the mics on and I need your answers. Fine. No. सुनिएगा पहले. So for example, if you have D1, जैसे D4 के केस में हम लोगों ने बताया था ना उसी तरह से. So here you have the EG level and here you have the T2G level. And let us suppose this is the case for strong field ligand. अगर आपके पास strong field ligand है तब क्या होगा? And tell me guys, strong field ligand में what is greater, del O या pairing? कौन बड़ा होता है strong field ligand में? What is larger? हाँ, del O is larger. Very good. देखिए guys, please try to answer, है ना. अगर दूसरा कोई आंसर कर देगा आपसे पहले, इसका मतलब है आपका दिमाग उस टाइम नहीं चल रहा है. ठीक है. सो कीप योर माइंड ऑन, लीव योर पेन असाइड. बिल्कुल कलम को रख दीजिए और माइक ऑन करके बैठ जाइए. ठीक है. माइक ऑन करके, बहुत आसान से सवाल है. आपके दिमाग में जो आ रहा है पहले उसको तुरंत आप बोलते जाइएगा. ठीक है. माइक ऑन करके बैठे सब लोग प्लीज. माइक ऑन कर लें. आमना, यस. मरियम, मरियम खातून, कीप योर माइक ऑन. नो नीड टू वरी. कीप योर माइक ऑन. रबा, सिद्रा, हाँ, कीप योर माइक ऑन. आई विल स्टार्ट. ठीक है. बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. आप लोग आंसर देने के लिए तैयार रहिएगा. ठीक है. आंसर देने के लिए तैयार रहिएगा. चलिए, सबसे पहला सवाल है, विच इज लोअर इन एनर्जी, ईजी और टी2जी? विच इज लोअर इन एनर्जी, ईजी और टी2जी? जोर से बोले प्लीज. ईजी. विच इज लोअर इन एनर्जी, ईजी और टी2जी? देखिए, आप नोटबुक में देखिए कौन लोअर इन एनर्जी है. देखिए, विच इज लोअर इन एनर्जी, ईजी और टी2जी? आप देखिए. दूसरी प्लीज, आप लाइक इफ यू आर seeing something from your head, then that should have evidence in your notebook. बात समझ में आ रही है? आप अगर अपने याद से कुछ कह रहे हैं तो उसका एविडेंस आपको याद है. अच्छा ठीक है, नोटबुक में हमने वहां पे पढ़ा था. आप इंट्यूटिवली कुछ नहीं कहेंगे बिकॉज सारी चीजें हम लिखाते हैं. मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. मरियम खातून, आमना, पारकर, सिद्रा. यस. ठीक है. अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो नोटबुक में पलट के देखिए, ईजी टी2जी कहाँ पे आया था. वहां पे कहीं लिखाया होगा हमने कि टी2जी का लोअर एनर्जी. ईजी ऑर्बिटल. किसका लोअर होता है? T2G orbital is lower than EG orbital. अच्छा ठीक है, एक एक करके. पार्कर, कैन यू रीड सम लाइन फ्रॉम द नोटबुक जिससे आपको पता चल रहा है कि ईजी इज लोअर इन एनर्जी? The axial d orbital experience is lower in energy. दिस इज फॉर ml6 या ml4? पहले वो देख लीजिए आप. वी आर, यू शुड बी लुकिंग ना, बिकॉज़ वी आर हैविंग 6 लिगेंड्स. पहले वो देख लीजिए. करेक्ट है? Yes, sir. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. वी आर लुकिंग एट ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग. Yes, sir. ठीक है. ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में अब आप देखिए जरा, बताइए. रीड द लाइन. हाँ, रीड द लाइन. पार्कर, Yes, sir. read that line ना जो आप कह रहे थे, जिसकी वजह से you are saying that EG is lower in energy. Sir, You can change your answer, not a problem. ठीक है. उससे आप घबराइए मत. बस हाँ, एक बार कंफर्म कर लीजिए खुद को, है ना. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज द नोट्स. आपको नोट्स यूज करना आना चाहिए. yes, sir. हाँ, T2G. यू वांट टू T2G मेक सेंस. कैन यू रीड दैट लाइन जिससे जिससे आपको पता चल रहा है दैट T2G इज लोअर इन एनर्जी? टेल मी, किस लाइन से आपको पता चल रहा है दैट T2G इज लोअर इन एनर्जी? रीड दैट लाइन.
नहीं है, कोई लाइन नहीं है। अच्छा, Rabba, I think you were having T2G answer. Yes, Rabba, read that line. What was the line? Sir, repulsion between electrons. अरे पूरा लाइन पर हमको आना चाहिए। T2G लोअर एनर्जी, कम से कम ये दोनों वर्ड तो आए कम से कम। Yes, sir. T2G is lower in energy because of repulsion between electrons and negatively charged अच्छा, ligands. आई थिंक उससे ज्यादा थोड़ा सस्ता हमने लिखा है, इतना हार्ड तो नहीं लिखाया था। Sir, I learned from your notes only, I guess. Yes. नहीं, यू हैव टू रीड इट। आई एम सेइंग कि आप रीड कीजिए। Sir, actually, I wrote these notes in C1 batch. So, yeah. अच्छा अच्छा, थोड़ा सा वहाँ पे Sir, चेंजेस हैं। यस यस, टेल मी। sir, I found it. यू फाउंड इट? यस पार्थ, टेल मी। The energy of non-axial d orbitals decrease, and that's एंड T2 orbitals. दोज आर द T2G ऑर्बिटल्स, है ना? ठीक है, ये लाइन था। Yes. दिस इज द लाइन। और दूसरी चीज आप देखिए यहाँ पे, जब व्हेन वी आर ड्राइंग ना, तो उसमें भी आपको नजर आ रहा है ना दैट T2G नीचे है तो उसकी एनर्जी कम है, और EG ऊपर है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है। Yes, दो sir. तरीकों से आपके दिमाग में दो तरीकों से रह सकता है, या तो नोट्स आपको याद रहे या तो डायग्राम याद रहे। सो फ्रॉम द डायग्राम आल्सो यू कैन से दैट इन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग EG की एनर्जी इंक्रीज करती है ना? इंक्रीज ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, फाइन। अच्छा, so we have established that T2G is having lower energy. Make sense all of you guys? Yes, no? Now please turn your mic on everyone. Yes, sir. ठीक है। now सारी की सारी चीजें, everything in the universe it want to have the lowest energy state possible. Correct है guys? Yes, sir. yes or no? सबसे कम एनर्जी। तो अब डी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना पसंद करेगा, EG में या T2G में? जहां पे कम T2G. एनर्जी है ना, जहां पे कम एनर्जी, कहाँ पे कम एनर्जी, T2G में। ठीक है। T2G. अब उसके बाद वेदर इट इज वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वी हैव ओनली वन ऑप्शन दैट इट इज गोइंग टू गो टू द T2G लेवल। अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ आई हैव D2? D2 के केस में अच्छा T2G. देखिए, है ना T2G. T2G में। हाँ वेट अ सेकंड, एक बार यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं इसको। यू राइट हियर DX। ठीक है, DX का मतलब X में आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। और उसके बाद इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, and here you will have weak field ligand, fine. Strong field ligand, Yes. weak field ligand, and also what you will put, we will put uh, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फाइन। और यहाँ पे भी सेकंड, T2G एंड EG। जस्ट गिव मी अ सेकंड ना, इसको हम थोड़ा सा सजा लेते हैं फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इसको वाइट करो। ठीक है, आपके पास किसका माइक ऑन? क्या कर रहे हैं आप प्रभा? हाँ, Sir, nothing. चल रही लग रहा है ऐसे। T3, D4, D5 लड़ रहे हैं किसी से आप? हम्म, D8, D9, D10। ठीक है, अलग अलग हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। एक और चीज में बस हम ऐड कर देते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका रेड में रहेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको भी लाल कर देते हैं। चलिए, यूपी समझ रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, और इसका ब्लू में रह जाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर वीक फील्ड लिगेंड कितने रहेंगे,
चलिए धीरे धीरे समझ में आएगा ना, घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए। जब हम D1 की बात कर रहे हैं, जब हम D1 की बात कर रहे हैं, so in that case I can say that the T2G level it is having, T2G level it is having one One electron electron. and EG is having 0 electron. Make sense? Yes or no? Please tell me guys, all of you. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे भी T2G में 1 है और EG में 0 है। इन बोथ द केसेस अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 and 1. करेक्ट है गाइस? Yes, sir. ठीक है, बाइक से लिखते हैं इसको। 1 0 1 1 0 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग, अब जब आपके पास D2 आएगा, ठीक है, नाउ वी हैव अ नोशन कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, पेयरिंग होती है, फाइन। बट प्लीज रिमेंबर, पेयरिंग अगर कराइएगा ना तो आपके पास यहाँ पे ऐसे पेयरिंग होगी। मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी। Yes, sir. दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी तो आ सकता है, ये भी तो आपके पास सेम एनर्जी में है ना। समझिए, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन डाला, चाहे आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाला, बोथ ऑफ देम आर हैविंग, बोथ ऑफ देम आर ऑन द T2G लेवल, दैट मींस बोथ ऑफ देम विल हैव सेम एनर्जी। मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन if you are going to pair it right now, if you are going to pair it right now, then what is going repulsion between these two electrons, and repulsion is bad. So rather than putting the electron pair करने से पहले, I will fill it here because I have some available orbitals. Make sense? Yes or no? Please tell me guys. Yes, sir. ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में D2 में पेयरिंग नहीं होगी बिकॉज वी हैव अवेलेबल ऑर्बिटल्स। इन वीक फील्ड लिगेंड ऑब्वियसली पेयरिंग को वहां पे आप लोग सवाल ही नहीं कहा, कंफ्यूजन ही नहीं आएगा। राइट, सो T2G लेवल इन D2 विल बी T2G2 EG0, अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 2 इन द स्ट्रॉन्ग फील्ड केस आल्सो। वीक फील्ड में भी T2G2 EG0 और अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 2। मेक सेंस? ऐसा प्लीज टेल मी गाइस। Yes, sir. D3 में भी वही सेम हो जाएगा, Sir. एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड। मेक सेंस? हाँ जी बताएं, D3 समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. D3 and EgC0. Unpaired electron is 3. T2G3, EG0, unpaired electron, it is equal to 3. Fine. अब आते हैं D4 के केस में। Now in D4 obviously, अब D4 के केस में क्या कर सकते हैं, या तो आप पेयरिंग कीजिए या तो आप ऊपर भेजिए। तो obviously if it is strong field ligand, the del O will be very high. ठीक है, strong field ligand में क्या होगा, del O is very high than pairing, और weak field ligand में del O is smaller than pairing। ठीक है, तो इफ डेलो इज वेरी हाई तो वो ज्यादा एनर्जी नहीं चाहेगा, कम एनर्जी चाहेगा, तो वो पेयरिंग को चूज कर लेगा। एंड इन दिस केस अवर T2G विल बिकम, अच्छा, इन वीक फील्ड लिगेंड इट विल गो अबव, EG लेवल में चला जाएगा। सो इन D4 व्हाट विल हैपन, T2G4, EG इज स्टिल 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग एंड इट इज गोइंग टू 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो कितना हो गया, 2. 2। For weak field ligand, the T2G is still 3, EG has increased electron to 1, and the unpaired electron is 1, 2, 3, and one more 4. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. ऐसे आप लोग D5, D6 तक करके हमको भेज सकते हैं। Yes, sir. बाकी लोग बताएं, कर सकते हैं D6 तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, D6 तक करके भेजिएगा। Do you guys have any class today? और कोई क्लास है क्या आप लोगों की आज? Bio. और बायो कब है? 6:30. 6:30। अच्छा, India's 9 p.m. इंडिया में। सिलेबस हो गया क्या, बायो में रिवीजन वगैरह चल रहा है क्या, या फिर? No, sir, we're not over with the syllabus. अच्छा, मरियम खातून, yes, मरियम खातून, can you please tell your mic on? Yes. See, in strong field ligand, what happened? We paired the electrons. देखिए D4 ये है, right? Yes. So यहाँ पे दो unpaired electron है ना, एक unpaired और दूसरा unpaired electron. So we have only two unpaired electrons here. But in weak field ligand, we have 1, 2, 3, and 4 unpaired electrons. Make sense, Mariam Father? ठीक है।
B6 तक ना करके भेजिए, उसके बाद मतलब हम एक बार चेक कर लेंगे ठीक है कि नहीं ठीक है। मैंने तो आपको सारा भेज दिया। लेट मी सी, D7 में ये दैट्स फाइन। और वहाँ पे 5 दूसरा, हाँ ठीक है, 5 का वेरी गुड, करेक्ट है। और भाई कौन है ये पूरा इसमें? आयशा, सर कैन यू एक्सप्लेन फॉर डी? यस आमना, टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम 26, बताइए आप क्या सोच रहे हो, वो बताइए आप। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कैसे फिल करेंगे? विल स्टार्ट विथ 1 2 3, है ना? उसके बाद पेयरिंग 4 1 2 3 5 5 6, ठीक है? Yes, sir. तो T2G में 6 हो गए और EG में एक भी नहीं बचा, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इक्वल टू 0। मेक सेंस? Yes, sir. और अगर हम वीक फील्ड लिगेंड की बात करें, देन इन दैट केस वी विल स्टार्ट विद द T2G 1 2 3, देन वी विल गो अप 4 5, ठीक है? उसके बाद अब वापस कहाँ जाएंगे? नीचे। मेक सेंस? Yes, sir. अब मतलब अब तो या तो अब ऑप्शन क्या बचा, या तो EG या तो T2G। तो फिर से EG और T2G में क्या कर सकते हैं हम? EG और T2G में T2G को चूज करेंगे। देयर इज नो Yes, ऑप्शन बट वी हैव टू पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, है ना? ऐसा नहीं कि वीक फील्ड में कभी भी पेयरिंग नहीं होगी, एज यू कैन सी कि जब मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर पेयरिंग करना पड़ेगा। मेक सेंस? yes, sir. हियर इट विल बी 4 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द EG। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। हाँ करेक्ट आयशा। आयशा, नो नीड टू सेंड इट इन द चैट, इतना टाइप मत कीजिए आप, ठीक है? आप नोट्स में लिखिए और आई विल एक्सप्लेन इट ना राइट नाउ। अगर वहां पे कहीं आपको गड़बड़ नजर आई तो उसको ठीक कर लीजिएगा, या समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। ओके आयशा? ठीक है, चलिए सी हियर गाइस, आई होप अच्छा कुछ लोगों ने और भेजा है। न्यू नंबर वंस अगेन आ गया। D6 करेक्ट है, 4 2 4, ठीक है, हाँ सही है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए फॉर D5 T2G में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, EG में 0। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 1 4 और 1 बच जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लीज लेट मी नो इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनीथिंग इन डिटेल, ठीक है? हमको बताइएगा। D4 करके D6 भी हमने देख लिया। इन द वीक फील्ड लिगेंड, first of all we will fill the 3 electrons in the T2G level, then we will fill 2 electrons in the EG level, और उसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग? उसके बाद 5 unpaired electrons will be remaining। D6 I have just told right now, अब यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 3। D7, so D7 1 2 3 4 5 6 and 7। this is for what? This is for strong field ligand। okay मरियम खातून, you are confused, स्टार्टिंग से कंफ्यूज हैं आप या क्या हो रहा है बताइए? So actually, I didn't attend last class, maybe that's why. वो आप लास्ट क्लास में नहीं थे? Yeah. तो आप EG और T2G ही नहीं पता होगा आपको तो, है ना? व्हाट इज EG, व्हाट इज T2G? So little bit I know, but सॉरी, sir, I learned this, but I didn't remember properly. I you learned learned this yes, sir. in the school में? But
Yeah. No, sir, for exam. I was having RPL exam now. अच्छा ठीक है मतलब चलिए हम क्या मतलब डेल ओ पता है आपको मतलब डेल ओ इसका भी आइडिया नहीं होगा आपको है ना सर आप एक काम कीजिएगा यू वॉच द रिकॉर्डिंग ठीक है Okay. पिछले क्लास वाला उसके बाद इसको रिविजिट कर लीजिएगा मेक सेंस Yes, sir. ठीक है now for D7 T2G will be 6 because T2G is filled और EG में एक इलेक्ट्रॉन आएगा and this one electron in the EG level it is the unpaired electron when we will be looking at the weak field again then D7 will be 1 2 3 pairing will not happen look above 1 2 3 4 5 then 6 and 7 so T2G is 3 plus 2 5 and EG is still 2 number of unpaired electron will decrease to 2 sorry decrease to 3 now in D8 it will be T2G6 फिल हो चुका है EG में एक इलेक्ट्रॉन था अब EG में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे and these two electrons will be unpaired so two electrons are unpaired now in the case of weak field again T2G में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा T2G में 6 होगा और EG में still it will be 2 number of unpaired electron ये आप इस तरह से हो जाएगा number of unpaired electron will be still 2 now as you can see T2G तो fill हो चुका है strong field again में T2G will be still 6 EG will be 3 out of 3 one will be paired एक ऑर्बिटल पेयर होगा और एक इलेक्ट्रॉन खाली होगा so it will be 1 unpaired electron in D9 T2G तो फिल हो चुका है बिल्कुल तो T2G तो 6 हो जाएगा और EG में क्या आ जाएगा दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एंड द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी सॉरी EG में आ जाएंगे तीन इलेक्ट्रॉन में नहीं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सो अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 1 सर कैन आई आल्सो हाँ फाइन फाइन प्रभा नॉट अ प्रॉब्लम you can be if you have done this you can be no problem Yes, sir. no problem अब D10 में it will be 6 4 no unpaired electrons T2G 6 4 and no unpaired electrons ठीक है now important thing that you have to see here is if you start from D1 to D3 ठीक है so everything is same whether it is strong field ligand or weak field ligand और उसके बाद अगर हम बात करें D4 से लेके D7 तक things are different D8 से वापस से everything is same fine so please see बस यही केसेस हैं जिसमें there is a difference otherwise you don't have to see whether it's, anything is strong field ligand or weak field ligand बाकी चीजों में आपको नहीं देखना पड़ेगा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ठीक है यहीं भी बस डिफरेंस है बाकी दोनों जगह इट इज गोइंग टू बी सेम चलिए प्लीज राइट दिस डाउन कंप्लीट कर लीजिए रेज योर हैंड इफ यू आर ऑलरेडी डन waiting for Anna, Aisha and Sidra. Everyone is done. ये तो बस सिंपल से एक डी स्केल का डी स्केल होगा नाउ वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस है ना सवालों में हम लोग देखेंगे हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस प्लीज राइट सवाल लिखिएगा predict the number of unpaired electrons in platinum
Cn whole 4, platinum Cn whole 4, 2 negative ion. Now, whenever in the board examination, whenever they give you this type of question, they will also give you the atomic number for platinum. ठीक है? They will give you the atomic number for platinum और उससे फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालना पड़ेगा. तो बट उससे अच्छा है कि कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए, फॉर एग्जांपल प्लैटिनम इज एन इंपॉर्टेंट वन, प्लैटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, उसके लिए आप लोग याद ही कर लीजिए. सो दिस प्लैटिनम इट कम्स इन द ग्रुप ऑफ निकल. So you have nickel, PD and PT. You can remember these three as नहीं पढ़ पाता. ठीक है, नहीं पढ़ पाता. All of this they are in the same group. For nickel, nickel का atomic number होता है 28. See, nickel is 28. So इसका configuration क्या हो जाएगा? It will be 4s2 3d8. Now, no matter what the atomic number for palladium is, it is going to be एक बस आपको क्या increase करना है? The shell number. It will be 5s2 and 4d8. For platinum, what you will say that it is 6s2 and it is 5d8. Even though it is not exactly this, but आपको उसको चिंता नहीं करनी है. Fine. आप यही याद करके there will be no problem with that. Why? Because you have to see that the platinum oxidation state here it is. Let us assume X. Cn is -1. So X plus 4 into -1 will be equal to -2. So X will be equal to 4 into -1 will be -4. -4 will go that side. It will become 4 minus 2, which is equal to +2. That means we need the electronic configuration of rather platinum 2 positive, which is equal to what? Platinum 2 positive will be what? 6s0 and we will have 5d8. So we have the d8 configuration. Now, next thing is that whether it is octahedral या फिर हमको tetrahedral वाला देखना पड़ेगा. So it is 4 ligands. That means it will be either tetrahedral or it will be square planar. Now, as you can see, this platinum, it is of 5D series. Platinum जब 5D series का है, तो tell me guys, look at the previous class notes and tell me 5D series में, if you have Ml4 and the central metal atom is of 5D series and the oxidation state it is equal to +2, then square planar होता है या tetrahedral होता है? It will be there in your notes. Tell me. 5D series, oxidation state is +2. Don't even have to look at the ligands. Tell me whether it will be square planar or tetrahedral. Tetrahedral. टेट्राहेड्रल पक्का देख के बता रहे हैं या फिर ऐसे बोल रहे हैं? हाँ गाइस, D8 कॉन्फ़िगरेशन Ml4. Yes, Parker. Okay, Amna, I mean, you have it in your notes ना, आप notes देख के बोल रहे हैं ना, Amna? Yes, sir. Sidra also, okay. What about Parker? आप क्या कह रहे थे? Sir, even I'm seeing the notes. You're seeing the notes. It is tetrahedral. Yes, sir. कैसे बताइए जरा? I don't think so. देखिए, what is it? Tetrahedral is. So your voice is cracking. ये और नहीं है भाई, ठीक है ना? And 3D series and oxidation state is +2 and ligand is before H2O. Make sense? देखिए 4D और 5D के लिए तो क्या है? स्क्वायर प्लेनर ही है. Am I audible, guys? Hello. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो स्क्वायर प्लेनर होगा. Make sense? Yes, sir. And also you can see square planar होगा. That means the electrons will be
The ligand is strong field ligand and the electrons will be paired. तो D8 पहले हम लोग बनाते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right. So D8, it is what? It is completely paired. So you will write, since CN is strong field ligand, all electrons in D8 will be paired. Therefore, 0 unpaired electrons in platinum CN whole 4, 2 negative. Write this down, guys. Raise your hand once you're done. Raise your hand once you're done, guys. Waiting for Aisha, Parker, and Sidra. Waiting for Parker and Sidra. Just waiting for Sidra now. Okay, everyone is done. Just give me a second.
I'm looking for a few more questions. तो हाँ, जब तक आप ये कीजिए. On the basis of crystal field theory, write the electronic configuration for a d5 ion with strong field ligand for which del O is greater than pairing. समझ में आ रही है? T2G और EG लेवल वाले पूछ रहे हैं सवाल. Make sense? Yes or no? Please tell me. Send your answers. Sir, Yes, just tell me. sir, you have to even show the electrons in EG and T2G. No, not necessarily. आपको बस वो लिखना पड़ेगा. T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, EG में कितने इलेक्ट्रॉन. That's it. Okay, sir. Yes, Aisha, correct. Very good. Yes, Parker, correct. Very good. You have to give reasons. ये दोनों का यहाँ बता देते हैं. तो है सवाल यहाँ पे. I mean, you will be. आपको यहाँ पे दिक्कत ये होगी ना, जैसे देखिए. हाँ, T2G and EG5. Sorry, T2G and EG0. So वो T2G5 and EG0. Give reasons. Low spin. हाँ. Any question, guys? Give reason. Low spin tetrahedral complexes are not formed. ठीक है. इसका हम रीजन आप लोग को लिखा देंगे. ये कीजिए आप लोग. Cobalt NH3O6 3 positive is an inner orbital complex, whereas nickel NH3 2 positive is an outer orbital complex. इसको पूरा लिखना है आप लोग को, है ना. यू विल कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. उसके बाद कोबाल्ट का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता नहीं होता, उसके हिसाब से बताइएगा वेदर NH3 इज गोइंग टू बी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड. NH3 इज नाइट्रोजन डोनर. नाइट्रोजन डोनर में आता है, तो स्ट्रांग फील्ड होगा या वीक फील्ड होगा. स्ट्रांग फील्ड होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, वीक फील्ड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी. इस तरह से करना है. ठीक है. बट उसमें अफसोस इस बात है कि ये सिर्फ एक मार्क का सवाल है. Sir, your voice is cracking. Cracking for everyone. Yes, Amna,
Alia, tell me guys. No. अच्छा, अच्छा, here guys, देखिए पहला जो सवाल है ना, लो स्पिन complexes are not formed. ठीक है. Now again, they are not formed. But we have high spin, low spin, both of these things. So now I think my voice is better. Just give me a second, guys. Guys, I'm reading a sentence. Let me know if my voice is audible or not. Low spin tetrahedral complexes are not formed. Am I audible properly? Yes, sir. Okay. So we have seen that the del T is what? It's very smaller than del O. Sorry, is very smaller than del O. That is why this del T ना, ये आपके पास सबसे पहले तो लो स्पिन का मतलब क्या? पेयरिंग होनी चाहिए. When pairing will occur, then there will be less unpaired electron. When there will be less unpaired electron, that means it is low spin. Now, तो उल्टा होता है. Now this particular del T, it is what? It is very small. It is not sufficient for pairing. ठीक है? So you will write here del T
Why does, you'll write the पहले वाले का answer. Del T is not sufficient. Del T, it is not sufficient for the pairing of electrons. Pairing of electrons. अब दूसरा आते हैं सेकंड केस में. Now first of all, कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इज कोबाल्ट दिस C. अमोनिया इज 0, यहाँ पे भी अमोनिया 0. ठीक है. Here cobalt is what? Cobalt is +3. Now when cobalt is +3, that means the electronic configuration will be Sakti Vikraman Fe-Co 2627. That means it is argon 4s0 and 3d6. Make sense, guys? Jasola, please tell me. Yes, sir. And for nickel, it is +2. Nickel, it is +2. Now in this case, nickel Sakti Vikraman Fe-Co Ni. That means it is argon 4s0, 3d8. Make sense, Jasola, please tell me. Yes, sir. ठीक. अब ये समझ गया कि as NH3 is strong field ligand, +3 में तो nitrogen donors are strong field ligand. When you have +3 state, strong field ligand, then obviously this pairing will take place. One, two, three, four, five, six. So you will say that 2 d orbitals of 3d are available for D2sp3 hybridization, meaning inner orbital complex. निकल 2 पॉजिटिव में क्या होगा? यहाँ पे निकल 2 पॉजिटिव में सी एक चीज तो ये समझिए आप कि व्हेन यू हैव 2 पॉजिटिव, इन दैट केस नाइट्रोजन डोनर्स आर नॉट जनरली नॉट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान भी लें, देन ऑल्सो अगर पेयरिंग हो भी जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, सो सिर्फ एक डी ऑर्बिटल वेकेंट बचेगा. और एक डी ऑर्बिटल वेकेंट बचने की वजह से कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे, राइट? वी नीड 2 डी ऑर्बिटल्स वेकेंट. सो यू विल से दैट इन D8, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? इसमें प्रॉब्लम लिगेंड की वजह से नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है ऑक्यूपेशन ऑफ डी ऑर्बिट, डी सबशेल. इन D8, यू राइट इन D8 only one orbital will be vacant in strong field ligands. But for ML6 we need two of 3d orbitals. Therefore sp3d2 hybridization is there in nickel NH3 whole 6 2 positive. Write this down. Raise your hand once you're done. Sir, sir, can you please scroll a little up to the first question? On the basis of crystal field theory,
Write the electronic No. configuration of D5. No, उससे sir, पहले the Bose-Pin tetrahedral complex. predict the number of electrons in this one. No, sir, the give reason first question. यही तो है, ये तो है पहले, इसमें क्या हम हो जाए ऊपर. Got it? लो स्पिन टटल मिल गया ना. Yes, sir. Raise your hand once you're done, guys. Mariam Khatun, just waiting for you now. Moving on. Please write the heading. सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पे आप लिमिटेशंस ऑफ CFT. For limitations of CFT, there are a few points. अब वैसे जानते हैं ये इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन अब ना बहुत कम आने लगे हैं, बट दे कैन बी प्रेजेंट इन योर न्यूमेरिकल्स. ये आपको ऐसा डिटेल नहीं आएगा, ये ना राइट द लिमिटेशंस ऑफ CFT, इस तरह के सवाल अब बिल्कुल ही मतलब ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं. एप्लीकेशन भी ज्यादा आते हैं, बट हाँ MCQ वगैरह में आ सकता है, थोड़ा घुमा के पूछ ले, तो प्लीज राइट दिस. सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा इट अकाउंट्स ओनली फॉर इट, या फिर इट ओनली अकाउंट्स फॉर the ionic character of metal ligand bonds. एंड अब देखिए इसको ना दो पॉइंट में भी लिख सकते हैं आप, बट एक ही पॉइंट में लिख लीजिए. एंड डज नॉट कंसिडर द पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर of the metal ligand bond. Now, the second limitation is very important. Please think. According to CFT, purely ionic ligands should have strong field
and make stronger bond with metal. But that is not true. Most anionic ligands are weak field ligand, and strongest bond is made by Cu, which is neutral. Okay, so since the crystal field theory, it's said that started with, it's the theory only started that the central metal atom, it is having a point, it will be considered as point positive charge, the ligands will be considered as the point negative charge, और positive और negative के interaction से आपके पास bond बनेगा. तो सबसे बढ़िया bond और जो स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर आता है, तो वो तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज से आना चाहिए था, एनायनिक से. बट इफ यू लुक एट द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऑल द जितने भी वीक फील्ड है ना, लाइक मोस्ट ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स आर वीक फील्ड ओनली. एंड इन स्ट्रॉन्ग फील्ड आते हैं आपके पास अमोनिया होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, कार्बोनिल होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, राइट. ऑल ऑफ दिस कोवेलेंट, आई मीन नॉट कोवेलेंट, रादर न्यूट्रल लिगेंड्स आर व्हाट, आर strong field ligands. ये होना नहीं चाहिए था according to CFT. So this is only explained in the later theories of ligand field theory एक है, और उसके बाद और डिटेलिंग है molecular orbital theory. ठीक है, so these are the limitations of CFT. इस वजह से बाकी दो theories हैं. Write this down. Raise your hand once you're done. Just waiting for Alia and Amna. Just waiting for Alia. Okay. Now, right next. Bonding in metal carbonyls. Bonding in metal carbonyls. मेटल कार्बोनिल के अंदर दोनों बॉन्ड होते हैं, सिग्मा भी होता है और पाई कैरेक्टर भी होता है. ठीक है, प्लीज राइट. metal carbonyl bond has both sigma and pi character. ठीक है, पहले देखिए सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है. द मेटल कार्बोनिल sigma bond is formed by the donation of electron from lone pair of carbon in CO to the empty d orbitals. empty d orbital, जो कि लिगेंड का काम ही होता है. लिगेंड का काम क्या होता है, d ऑर्बिटल में, मेटल के d ऑर्बिटल में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को डालना है. ठीक है, सो वी हैव मेटल, इसका हमने एक ऑर्बिटल ले लिया, and we have carbonyl. Carbonyl is C triple bond oxygen, and this carbon atom will be having a lone pair with a negative charge also. ठीक है, यहाँ पे इसके पास lone pair होता है, इसी वजह से, sorry, not negative charge, only a lone pair. This lone pair it is given to the metal atom. तो इससे एक सिग्मा बॉन्डिंग आती, that means we have metal and there is a electron density between metal and carbonyl इस तरह से, and this is the sigma overlap. ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह से, we will don't need to show this. So this overlap is what, sigma overlap. Right, it's fine.
the metal CO pi bond is formed by the pi overlap between filled d orbitals of central metal atom and anti-bonding pi star orbital of CO. ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, राइट? सो पीसी मेटल के पास तो डी ऑर्बिटल से कुछ इस तरह से। मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं ऐसे, एंड सिमिलरली वी हैव सीओ के पाई स्टार ऑर्बिटल्स। वी हैव सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, तो इसके पाई स्टार ऑर्बिटल भी इसी तरह से होते हैं ना, पाइस। अब ये शायद आप लोग को अगर ध्यान नहीं है, थोड़ा सा बता देते हैं, जब पी ऑर्बिटल्स व्हेन दे ओवरलैप लाइक दिस ना, सो एक बॉन्डिंग बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग। सो बॉन्डिंग इज लाइक दिस, ऊपर और नीचे, और जो एंटी बॉन्डिंग बनता है ये इस तरह से रहता है, लाइक दिस। यू मस्ट हैव डन दिस इन योर 11th स्टैंडर्ड, ठीक है? यहाँ पे आपके पास, अच्छा ये सारी चीजें फिर आएंगी नहीं, मतलब आपको बनाने के लिए तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, कभी आता नहीं है। अब यहाँ पे जो डोनेशन हो रहा है, इट इज फ्रॉम द मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल से पाई स्टार विच इज जनरली एम्प्टी। पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल। अब आपके पास बनेगा पाई बॉन्ड मेटल और कार्बोनिल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है? सो दिस इज नोन एज पाई ओवरलैप। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान भी ये रखना है कि सिग्मा में कहां से कहा जा रहा है, कार्बोनिल से मेटल, और पाई बॉन्ड में कहां से कहा जा रहा है, मेटल से कार्बोनिल जा रहा है। अब देखिए बोथ ऑफ दीज, यानी कि आपके पास क्या आ गया, एक सेकंड प्लीज। ठीक है, हाँ। सो carbonyl is also giving electrons to form a bond, metal is also giving electron to form a bond. So when both these species are working together to form a bond, तो इसमें सिनर्जी आ जाती। सिनर्जी इज जस्ट अ कॉमन वर्ड, जब बहुत सारे लोग एक ही गोल की तरफ काम करते हैं। सो हियर मेटल एंड कार्बोनिल बोथ आर वर्किंग टुवर्ड्स वन गोल ऑफ बॉन्डिंग, so that is why it creates a synergic effect and makes metal carbonyls very stable. So please write the metal to ligand bonding in metal carbonyls creates a synergic effect which strengthens the bond between metal and carbonyl. This type of bonding is called synergic bond. So the ligands which accept electron from metals are called pi acceptor ligands.
Hello, fit and guys. Alia and Marim Fatun, raise your hand once you're done. ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, टॉपिक लिखिएगा कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। नाउ प्लीज लीव योर पेन असाइड, ठीक है, पेन को छोड़ दीजिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज, आप लोग माइक ऑन करके हमको आंसर दीजिए। अगर आपने अपने कमरे का लाइट बंद कर दिया, इफ यू टर्न द लाइट ऑफ, विल यू बी एबल टू सी कलर? No. नहीं पता ना, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों को अगर लग रहा है सर ये लेकिन रेड कलर हमको दिखेगा अगर हम लाइट ऑफ भी कर दे, तो आई विल से दैट इट इज, देन इट इज नॉट कलर। कलर वही होता है जो लाइट के प्रेजेंस में दिखे, लाइट बंद कर देने पे ना दिखे। एंड दिस इज एमिशन ऑफ लाइट, है ना, वही हम फर्क समझा दे रहे थोड़ा। पेन में, लाइक व्हेन यू व्हाइल यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, दैट ब्लू और ब्लैक पेन, व्हेन इफ यू टर्न द लाइट ऑफ इट विल नॉट बी विजिबल, दैट इज कलर। ओके, दैट मींस प्रेजेंस ऑफ लाइट इज एसेंशियल फॉर कलर, ठीक है। नाउ व्हेन लाइट hits object, there are a few things that can happen. There are a few things that can happen. Light ने object को hit किया. What did the object do? It absorbed everything. Absorbed all light. If it absorbed all light, then nothing is reflected. Nothing is reflected. Therefore, object appears black. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. ठीक है. Another thing that can happen, nothing is absorbed. Nothing is, no light is absorbed, है ना, कोई भी फ्रीक्वेंसी absorb नहीं होती। when you are hitting light ना, तो उसमें विबज्योर हम मान के चल रहे हैं, you have all the colors, है ना, सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज है। so if nothing is absorbed and the white light is reflected, तो क्या होगा? therefore object appears white, है ना। या फिर आप जो कलर उस पे हिट करेंगे वही कलर नजर आएगा ना। जनरली हम लोग व्हाइट लाइट के बारे में मतलब व्हाइट लाइट लेके चल रहे हैं इन जनरल केस, इस वजह से इट अपीयर्स व्हाइट। मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस। करेक्ट है? ये वाला समझ में आया सबको कि नहीं आया? सेकंड पार्ट हाँ, है ना, कुछ तो बोल दें। No, sir. नहीं, ये अच्छा, ये समझ नहीं आया। अच्छा, सी, इफ नथिंग इज एब्सॉर्ब बाय द, आपके पास ऑब्जेक्ट है, लाइट हिट्स व्हाइट लाइट, ठीक है, एंड नथिंग इज एब्सॉर्ब, तो ये व्हाइट लाइट ही आपकी आंखों में पड़ेगा, और आपके आंखों में व्हाइट कलर का लाइट पड़ रहा है। कहां से? ऑब्जेक्ट की तरफ से, तो फिर वो ऑब्जेक्ट व्हाइट दिखेगा। मेक सेंस? नहीं? Yes, sir. व्हाट अबाउट अदर्स? मरीम पार्कर अभी भी नहीं समझ में आया? आपको लग रहा है कि सर अगर सब कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगर सब कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो फिर वो मिरर होगा? Yes, sir. नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है दैट इट, मतलब सिर्फ मिरर की ही प्रॉपर्टी नहीं होती है दैट एवरीथिंग, लाइक ऑल द लाइट आर बीइंग रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये व्हाइट लाइट में से कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ठीक है, बट इफ यू गिव इट ब्लू लाइट या फिर कुछ ऐसा स्पेसिफिक वेवलेंथ, तो फिर वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। ऑल्सो एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि एक तो पॉलिश सरफेस होता है मिरर में, और उसके पीछे रफ सरफेस होता है ना, Yes, sir. सिल्वर कलर। तो नाउ दैट रफ सरफेस ऑल्सो हेल्प्स इन व्हाट दैट, बेसिकली मिरर ट्रांसपेरेंट होता है ना, मिरर ट्रांसपेरेंट होता है, उसका जो रफ सरफेस होता है इट एब्जॉर्ब्स लाइट और फिर वो वापस भेजता है, ठीक। इफ यू आर सीइंग, आपके आंखों में क्या पड़ेगा? आपके आंखों में पड़ेगा व्हाइट लाइट,
और कहां से आता हुआ दिखेगा व्हाइट लाइट? यू विल बी सीइंग दैट व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. तो दिस ऑब्जेक्ट विल देन अपीयर व्हाइट. व्हाइट और ट्रांसपेरेंट में फर्क है थोड़ा, बात समझ में आ रही है पार्कर? Yes, sir. ठीक है. तो व्हेन दिस व्हाइट लाइट विल हिट यू इट विल अपीयर व्हाइट. अब देखिए थोड़ा सा एब्जॉर्ब तो जरूर होता है. आई एम नॉट सेइंग दैट नथिंग, आई मीन सी मेजॉरिटी एब्जॉर्ब नहीं होता है. दैट इज व्हाई इट अपीयर्स व्हाइट. ना एक, ये दो एक्सट्रीम केसेस हो गए. कुछ केस में कहोगे सम wavelength of light is absorbed and rest is reflected. ठीक है. तो अब जो बचा हुआ रिफ्लेक्ट हुआ है वो आपको क्या आएगा, नजर आएगा. सो फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट विब जियो, तो VIBGYOR, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो मान लीजिए आपके पास वायलेट और इंडिगो एब्जॉर्ब हो गया. नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्टेड? रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन. ठीक है. नाउ वट एवर बी द मिक्सचर ऑफ दिस कलर गिफ्ट, है ना, इस इन सारे कलर का मिक्सचर एक नया कलर बनाएगा. दैट विल बी द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट. मेक सेंस? Violet Yes, and sir. indigo is absorbed, the rest is reflected, and the rest will make a new color, and whatever be the color, that will be the object, color of object. So you will write, therefore object appears colorful, है ना. कलरफुल में कोई भी कलर आ सकता है. Now what is the necessary condition for an object to have color? The necessary condition is some light should be absorbed. अगर लाइट पूरा, some should be absorbed, not completely, और कुछ भी अगर एब्जॉर्ब नहीं हो तब भी हमारे पास यू विल नॉट सी व्हाट, वहां पे आपको कलर नहीं दिखाई देगा. मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी गाइस. Yes, sir. ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड नहीं, इट इज जनरल कि व्हाई डू यू सी कलर, है ना. बहुत सारे देखिए जनरली, आई होप ये पहली बार आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि कलर कैसे दिखता है. पहली बार पढ़ा है, पहले पढ़ा था आप लोगों ने कलर कैसे दिखता है? No, sir. Very bad. नहीं पढ़ा था ना. तो इस वजह से हम इसको पढ़ा देते हैं कि आप लोग को पता होना चाहिए कलर कैसे दिखता है. अब उसके बाद क्या नेसेसरी कंडीशन है? लाइट शुड बी एब्जॉर्ब सम वेवलेंथ. नो, ईच एंड एवरीथिंग जो भी मैटर है हमारे पास, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स. करेक्ट है गाइस? अरे हाँ, है Yes, ना sir. कुछ तो. एटम्स. एटम्स में क्या क्या होता है बोलो? एटम्स में होता है प्रोटॉन और Neutrons. न्यूट्रॉन, और एटम में Nucleons. न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स कहाँ से? न्यूक्लियस ही दोनों होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होता है ना भाई. Electrons. Electrons, right? Now protons and neutrons, these are in the nucleus. Yes, sir. Correct है? तो nothing happens to this protons and neutrons, right? Their energy whatever, वो एक ही जगह रहते हैं, they are not even moving, वो बस एक ही जगह है. इलेक्ट्रॉन्स rather you have been studying from the 11th standard कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, शेल के जंप कर जाते हैं, ट्रांजिशन होता है, नीचे आ जाते हैं, तो वहां से एनर्जी इमिट होता है. सो इलेक्ट्रॉन्स आर समथिंग विच आर गोइंग टू एब्जॉर्ब एनर्जी. बाकी कोई चीज तो वहां पे एब्जॉर्ब करने वाला नहीं है एनर्जी. मेक सेंस? Yes, sir. ठीक है. नाउ लेट अस सी, ml6 की बात करते हैं. तो आपके पास दो लेवल है एनर्जी. Now if you have unpaired electrons like this and there is this del O, मान लीजिए ये del O करस्पॉन्ड करता है वायलेट लाइट को. there is a difference in energy and that difference in energy is equal to the energy of violet light. हो सकता है ऐसा? बोले गाइस. इस आयशा, सिद्रा, पार्कर, आमना, टेल मी गाइस. हो Yes, सकता sir. है ना सर? Yes, नहीं sir. आता और हम. ठीक है. तो जब आप विबजियोर डालेंगे इसमें, इफ यू आर गोइंग टू हिट इट विद लाइट विबजियोर, देन दिस इलेक्ट्रॉन विल एब्सॉर्ब द वायलेट लाइट, और ये कहां चला जाएगा? ईजी लेवल में चला जाएगा. मेक सेंस? इज ऑन ऑफिशियल नहीं? Sir, how ठीक है. in EG level? अच्छा, बिकॉज दिस डेल ओ, इस डेल ओ की जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ वायलेट लाइट. वायलेट लाइट का कोई लैम्डा होगा, है ना. Yes, sir. दिस लैम्डा विल बी हैविंग, देखिए एनर्जी का होता है ना, एच सी अपॉन लैम्डा. सो दिस Yes, लैम्डा sir. विल करस्पॉन्ड टू सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ठीक. Yes, sir. तो आपने अगर इलेक्ट्रॉन को उतनी ही एनर्जी दी जो डेलो के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन तो एब्जॉर्ब कर लेगा ना एनर्जी को, बिकॉज ये पर्टिकुलर एनर्जी है, उसको आपने दिया इतना ही एनर्जी, बिल्कुल एग्जैक्टली. सो दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप ओवर द इजी लेवल.
It will Yes, sir. it will make sense. It will absorb the violet light and it will jump over the EG level. Now, if it has absorbed the violet light, तो फिर जो बाकी निकला हुआ कलर हुआ, what we will get? We will get indigo, blue, green, yellow, orange and red. अब इन सबके मिश्रण से what if you are going to mix it, whatever color is being given, वो कलर आपको उस ऑब्जेक्ट का दिखाई देगा, है ना, उस ऑब्जेक्ट का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. मेक सेंस? Yes, sir. Now this going of electron from T2G to EG level, it is known as DD transition. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है. हम लिखाते जा रहे हैं. If it does not make sense, please let me know and then I will explain it once again. ठीक है, चलिए please write here. इतना तो सब टाइप करने की कोशिश करेंगे because my hand is a bit tired of writing cursive. Please write the color we see in a complex is due to the light absorbed by the complex and the reflected light is complex, the complex and the reflected light is seen by us as the color. Take one point. Write another point. The d orbital electron absorbs energy and transitions to higher energy level from T2G to EG. This is called DD transition. This is called DD transition. Now, अगली चीज जो आप लिखिएगा, right? The frequency of light absorbed by the complex depends on the CFSE of complex. ठीक है, CFSE के बाद ना आपको नहीं पढ़ेगा. CFSE मतलब डेल ओ. डेल ओ ऑफ कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो वी नो दैट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, डेलो इज हायर. डेलो हाई है तो ऑब्वियसली एनर्जी विल बी हायर. Energy and frequency are directly proportional, so frequency will be higher. Energy and wavelength are inversely proportional, so wavelength will be lower. The strong field ligand, it absorbs wavelength of lower frequency. और उसी तरह से अगर हम weak field ligand की बात करें, then delta is lower, energy is lower, frequency is lower, and the lambda is higher.
इसके बाद लिखिएगा जरा एक सवाल। कंपेयर दी wavelength of light absorbed by the first complex is nickel H2O whole 6 2 positive। इसके बाद आपके पास निकल NH3 2 positive। then you have nickel NH3 whole 6, ठीक है, NO2 whole 6 4 negative, right? No. So they are asking you to compare the light absorbed। तो आपको बेसिकली क्या कंपेयर करना पहले, del O। So if you are going to compare the del O and look at the spectrochemical series, इसको हम A B C कर देते हैं। This is A, this is B and this is C। तो अगर आप देखें, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार, पानी सबसे पहले आ रहा है, पानी सबसे पहले आ रहा है, दैट मीन्स ए इसका सबसे कम है, ठीक है, पानी से प्यार। फिर उसके बाद व्हाट डू वी हैव, नाचते हुए उड़ता अमोनिया, नाचते हुए उड़ता अमोनिया आ गया अमीन। तो उसके बाद फिर बी का है, नाचते हुए उड़ता अमोनिया ऑब्वियसली। उसके बाद इन नॉर्थ कनाडा इज NO2, यू हैव सी। सो लैम्डा इसका ज्यादा है। So del और lambda में देखिए, if del is higher, del O is higher, then lambda is lower। तो lambda का जो क्या होगा, lambda का sequence और the order of lambda will be opposite। तो A B C सेम रहेगा, बस साइन भी चेंज कर देंगे हम लोग। A B C will be same, we'll just change the sign। Make sense? Yes or no? Please tell me, guys। Yes, sir. ठीक है, copy this down, raise your hand once you're done। That's it for today, guys। ठीक है, we will meet on next Thursday, नहीं Tuesday, अरे नहीं, मंडे को मिलते हैं हम ना। Yeah, we'll meet on Monday and we'll be doing